that. Come. उधर शिफ्ट हो तो मैं करता हूँ. हाँ कर हाँ. Listen. I wanted to talk to you. क्या कर रहा है? Listen, my bass is very big. ओके. I have big bass. बेबी को बेस पसंद है. What do you think of पूरा कॉलेज जाने का सिस्टम? कुछ नहीं, इंडियंस के लिए ज़रूरी है क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं और रिलाय बहुत ज़्यादा करते हैं. फ़ॉरेन की तरह नहीं कि जैसे 18 की हो जाओगे एक जॉब नहीं हो जाएगा. अभी भी अपन रिलाय कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के पैसों पर. अभी भी अपन ने अभी तक जॉब नहीं किया कुछ भी. तो कॉलेज का सीन इंडिया में अगर मैं देखूँ तो ज़रूरी है कि आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना नहीं सीखते, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे सीखते हो. खुद रहना सीखते हो, पेरेंट्स के बिना रहना सीखते हो, अकेले ट्रैवल करना सीखते हो. सेम केसेस में बाकी कॉलेजेस में आप सफाई रखना नहीं सीखते हो, सब कुछ रखना सीखते हो. यूआईडी का केस अलग है कि आप बस रूम की चाबी दे दो उनको और हाउस कीपिंग स्टाफ की तरह वो आपका रूम साफ करके चले जाएंगे. तो है. तू क्या सोच रहा है? मुझे पसंद नहीं है. क्या क्या पसंद है? इंडिया का कॉलेज कल्चर. तेरे को क्या लगता है क्या होना चाहिए? फॉरेन के जैसा होना चाहिए? नहीं वो भी नहीं, वो तो अलग तरीके का पसंद नहीं है मुझे. तो स्पेसिफाई कर. तू अगर तेरे हाथ में होता सब कुछ और कॉलेज एजुकेशन मिनिस्टर समझ ले और तेरे हाथ में होता कि कॉलेज सिस्टम एजुकेशन सिस्टम चेंज कर सकते, तो तू कॉलेजेस को कैसे बनाएगा? क्या रूल्स एंड रेगुलेशन डालेगा? I would make it more open. किस सेंस में ओपन? Open in the sense of in terms of education और say for example यहाँ पर जैसे तुम किसी भी क्लास में जाके बैठ नहीं सकते. बैठ सकते हैं. तू वी कैन. डेंटिस्ट्री के क्लास में जाके बैठ सकते हैं. क्या बात कर. यही तो है. बस आपको राइट माइंडसेट चाहिए, राइट रीज़न चाहिए बैठने का. अब ऐसी मस्ती करने के लिए अगर आप बैठ रहे हो तो नहीं, तो मैं भी मना कर दूँगा. लेकिन अगर बैठना मतलब लिटरली आपको जानना है और आप अपनी क्लास मिस करके नहीं बैठ रहे हो. जैसे मैं समझ ली डेंटिस्ट्री सैटरडे भी होता है और लॉ वाली भी सैटरडे होता है, तो फिर मैं जाके बैठ जाऊँ तो मैं जा सकता हूँ, बैठ सकता हूँ. तो टीचर को बोल दूँगा कि कुछ नहीं, कुछ जानना है, लॉ के बारे में जानना है, एक क्लास अटेंड करके देखना कैसा लगता है, तो बैठने देगा. क्यों नहीं बैठने देगा? कोई मना नहीं कर सकता. टीचर्स यही चाहते हैं कि स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखाएं. अगर स्टूडेंट खुद से आके एक ऐसी क्लास में बैठना चाह रहा है जो उसके करिकुलम में नहीं है, तो ही विल बी मोर देन एक्साइटेड टू वेलकम हिम इनटू द क्लास. मोस्ट टीचर्स. और बता. और किस सेंस में? I like the whole hostel का system. क्या एग्जैक्टली? The whole intermingling of different people simply because of the fact that they live in such close proximity. अपने रूममेट्स की बात कर रहे हैं, सेम फ्लोर वालों की, सेम हॉस्टल की बात कर रहे हैं? तीन. और जैसे अभी मैं दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गया, फिर मेरे लिए तो अच्छा है. कैसा?
रीच बड़ी हो. Yeah, it forces me to go out of my way and talk to more people. और फिर और बता. हॉस्टल हो गया, स्टडी हो गई, ओपन इन्वायरमेंट हो गया. फिर रिस्ट्रिक्शंस का कैसा लगता है देखो कॉलेज का. अब जैसे UID और NID को थोड़ा सा मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ. NID में यू आर ओपन टू 24/7 वर्कशॉप. कि आप रात को कैंपस के अंदर आपका टाइम रिस्ट्रिक्शन 11 बजे है. उसके बाद आप सुबह तक वर्कशॉप में बैठ सकते हो, क्लास में बैठ सकते हो. लेकिन एट UID वो बंद हो जाता है, क्लासेस ही बंद हो जाती हैं. कब? 4 बजे के बाद. और आप उसके बाद आपको परमिशन स्पेशली चाहिए होती है कुछ काम करने की. आप ऐसे ही बैठ के मस्ती नहीं कर सकते. NID में आप वो कर सकते हो, लेकिन फिर NID की बैच स्ट्रेंथ भी कम है. लेकिन तब भी अगर इतना बड़ा कैंपस है तो आपको थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए. अब कैसा लगता है? पता था तेरे को ये NID में ऐसा था? हाँ पता था कि आप ग्राउंड्स खुले ऐसे घूम सकते हो, सुबह तक जा सकते हो. ऐसे कुछ बस गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल का है सेम कि आप अंदर ही अंदर रहो, एक दूसरे के रूम में जा सो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. प्राइवेट की तरह ब्लॉक नहीं लग जाता हॉस्टल इसी UID. What do you think of the crowd at private colleges? देख एक्चुअली क्राउड की अगर बात करें तो क्राउड इज़ एक्चुअली सेम इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज. हाफ ऑफ द चिल्ड्रन देयर आर स्पून फेड, they are served on a silver platter, and half of the children they actually have real life experiences with a lot of things. They actually दोनों know cases how to, yeah, दोनों केसेस में. क्योंकि I have a friend Rishika who is at NID Bhopal, and she tells me that before going to college actually she thought that she will meet similar kind of people who are creatively on a higher level than the rest of us. But when she actually went to the college, she got to know that all the people, the variety is actually same. The same variety that you see in coaching classes in private college. Like you have that 2 to 3 children who are very good at their work, 2 to 3 children who are, the backbenchers of the crowd. I suppose design is an anomaly in this case क्योंकि the filtering mechanisms of design colleges are very different to regular say engineering या medical. क्योंकि उन लोग का not only do they filter for aptitude but also for work ethic. क्योंकि उनके एग्जामिनेशन जो inherently तुम्हें इतनी रेपिटेशन करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है. अगर हम यू वांट टू गेट इनटू एन IIT और वगैरह, अगर तुम्हें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये चाहिए, गुड रैंक चाहिए, यू हैव टू बी inherently competitive. You have to have that drive, and I think you find that a lot more in idea नहीं. अच्छा ऊपर तो वहाँ से होगा, देखो सीट दिख रही है शायद से लेफ्ट में, वहाँ से किसी से पूछ लो. क्या बोल रहा था? ऊपर ब्लॉग जाना है उसके बारे में. नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? इंक्वायरी करना. अच्छा, तुम बोल क्या? कम्पिटिटिव होना चाहिए आपको इन्हेरेंटली. हाँ, एंड आई थिंक aside from, I think because जितने भी डिज़ाइन के जो भी एग्जामिनेशन हैं, they only calculate for your natural aptitude. और उसके मतलब तरीके हैं to get better at, but it's not a science that people use, and it's not something that is known or accessible.
कि लोग देख कर पता करें एंड देन दे वर्क देयर asses off doing that thing to get better in terms of their aptitude for design. But in designing, you have to maintain that aptitude. Like for example, you have got that attitude and aptitude both for like what, 4 months, 5 months, and then you have to continue maintaining it. Because if you get, you slag off for the rest of your second year, third year, third sem, fourth sem, fifth sem, sixth sem, that is going to cost you a lot. Like for example, at NID, half of the children slag off and they lose their will to work in the designing field, so they drop out of NID. Like if for example the strength of first years freshers is 78 now, by the end of third sem or second sem, it will drop by what, 25%. Half of the people will not know how to work with the stress of the work. They actually don't know how to manage time. That's what college and job is all about. Time management, giving same amount of time to the family, to the friends, maintaining your work life, your love life. तो अगर अपन ने कॉलेज में ये नहीं सीखा तो क्या फ़ायदा। और नहीं सीखते बच्चे कुछ, जैसे अभी मास्टर्स क्या है, दे एक्चुअली रियली डोंट नो हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। ऐसा भी नहीं कि वो अपने होम टाउन से उन्होंने बैचलर्स करा है, नहीं, उन्होंने बाहर से ही बैचलर्स करा है। दे हैव बीन थ्रू द सेम कंडीशंस, दे हैव मेड फ्रेंड्स फॉर 4 years and now they have continued to be pulled into the same cycle again and again, like they did in bachelors. तो है, सबका आउटलुक सेम है। Why do they fall into this सेम पैटर्न कंटिन्यूसली। ये पता नहीं, मुझे लगता है, आई फील दैट if they find similar environment, it's actually really triggering, or it can actually trigger the same same type of behavior that they had previous for about 4 years, 3 years. तेरे को क्या लगता है? What views do you have on this topic? I think everything is tied to escapism. Everyone wants this constant need to escape the real world. They want to be absorbed in something else, in somebody else's life, in somebody else's stories, in the stories they hear online, fantasy, fiction. See, the moment you stop worrying about how to get involved in this imaginative world and stop living in the real world, the moment you get conscious of this, that's when you stop living in that imaginative world actually. अगर अपन भूल जाएं कि रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है तो वो ज़्यादा अच्छा है, बेनिफिशियल है। क्योंकि आप एक्चुअली, अगर आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो तो दैट्स एक्चुअली यू आर एक्चुअली लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इटसेल्फ। इमेजिनेटिव नहीं हो, इमेजिनेशन। एस्केपिज्म तो लोग सोचते हैं कि हमने एस्केप कर लिया, लेकिन एक्चुअली वो तब भी हर चीज़ सोच के कर रहे हैं। अपने एक्शंस को वो 2 बार फिल्टर कर रहे हैं। बच्चे और बड़े में वही डिफरेंस होता है। जो बच्चा सोच के कर देता है, वही बड़ा सोच के और करने में बीच में प्रोसेस होता है। जैसे डिज़ाइन में होता है, नॉर्मल लोगों में और डिज़ाइनर्स में क्या फ़र्क होता है? वो प्रोसेस का फ़र्क रहता है।
वैसे वो बच्चे और बड़े में रहता है, प्रोसेस का फ़र्क रहता है कि वो कुछ ऐसा काम करने से पहले बड़ा सोचता है कि शुड आई और शुड आई नॉट, वो एक रह जाता है। फिर आते हैं अपने टीम्स, जो वो चीज़ सोच लेते हैं लेकिन तब भी वो MCQ टाइप है। बच्चों के लिए वो MCQ नहीं होता, उनके पास सीधा आंसर होता है। बड़ों के लिए MCQ होता है, उसके बारे में बहुत सोचते हैं और सही आंसर चूज़ करते हैं। टीन्स, उनको सही आंसर भी पता होता है और बच्चों वाला आंसर भी पता होता है। टीन्स जो कि मिड रेंज में लाई करते हैं, सेंटर में लाई करते हैं, और वो ऑप्शन लास्ट में चुनते वही हैं जिसमें सबसे ज़्यादा थ्रिल होता है। इसलिए अभी वो यूट्यूब वीडियोज़ पे देखा होगा, सब पे देखा होगा कि कैसे मस्ती करते हैं। So interesting. What do you mean when you say कि MCQs रहते हैं? Example. MCQ जैसे अभी अपन पेड़ चढ़ रहे थे, हाँ. तो पेड़ चढ़ने से पहले एक एडल्ट सोचेगा कि बच्चे से चालू करता है काम, कि बच्चा सोचेगा कि ये पेड़ है, he'll get excited about it and he'll try to climb it. Whereas a teenager, no, let's skip the teenager part, we'll come to it after a while. फिर अपन एडल्ट पे जाते हैं, तो एडल्ट क्लाइंब करने से पहले सोचेगा कि हाँ मेरी एंकल ट्विस्ट हो सकता है, गलत चढ़ गया तो, अगर मैं स्लिप हो गया तो मेरे को हाथ में लग सकती है, मैं काम नहीं कर सकता 2-3 दिन तक, जो मेरे को होमवर्क मिला मैं वो नहीं कर पाऊँगा अच्छे से, क्रिकेट नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं गिर गया तो मेरे को पीठ लग जाएगी और पीठ का ऑपरेशन के लिए पैसे लग जाएंगे। ऊपर चढ़ जाऊँगा, ऊपर चढ़ गया किसी ने काट लिया, चीटी ने काट लिया, उसको दिखाना पड़ जाएगा, फिर 2-3 दिन चल जाएंगे। तो उसके दिमाग में इतनी पॉसिबिलिटीज़ रखी हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाता है, उसमें चॉइसेस बहुत सारी हैं कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर लास्ट में जाके वो चॉइस आती है कि थ्रिलिंग होगा, कि हाँ मैं ऊपर चढ़ जाऊँगा तो मेरे को कैसा लगेगा। एड्रेनलिन जंकी जो होते हैं वो वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो इतने ऑप्शन रहते हैं। फिर उसके बाद अब आते हैं अपन टीन्स पे। टीन को थ्रिलिंग वाला ऑप्शन सबसे पहले दिमाग में आता है कि अरे चढ़ जाता हूँ, इंट्रूसिव थॉट जो तू बोल रहा था कि चढ़ जाता हूँ, और फिर उसके बाद उनमें कैपेबिलिटी इतनी होती है कि वो लोग बाकी ऑप्शन भी सोच पाएँ। एडल्ट जितने इतने वेरिएशन में नहीं, लेकिन सोच लेते हैं कि जैसे मेरा पैर में मोच आ गई तो क्या होगा, ये क्या होगा, मम्मी क्या बोलेंगी, अलग टाइप के होते हैं MCQs कि हाँ ठीक है हट जाएगा, वर्क छूट जाएगा, दोस्त क्या बोलेंगे। फिर उसके बाद टीन्स में एक छोटी सी चीज़ ऐड हो जाती है जो बड़ों में नहीं होती और जो बच्चों में नहीं होती, पीयर प्रेशर। अगर मैं नहीं गया तो क्या है, मेरे को ये मैनली नहीं समझेंगे कि ये हाँ फट्टू है। पीयर प्रेशर में एक चीज़ ऐड हो जाती है, चाहे वो लोग ये चीज़ कभी कभी चूज़ करते हैं, जैसे कि सिगरेट के टाइम जिसको अपन ड्रग अब्यूज़ करते हैं, वो पीयर प्रेशर में कभी कभी वो लोग वो ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं कि ये लोग मेरे को कूल नहीं समझेंगे। मूवीज़ और एडवर्टीजिंग भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं उसमें, लेकिन उसका भी आना ही अपन को टॉपिक है। तो फिर टीनेजर्स लास्ट में वो लोग एट दी एंड चूज़ वही करते हैं जो थ्रिल देता है उन्हें, उसका आउटकम नहीं देखते। तो ऐसे होता है, जो भी बोलते हैं ना कि टीनेजर तो भी बच्चा है, टीनेजर्स को बहुत लोग बोलते हैं और अपन को लगता है कि हम एडल्ट हैं, हम टीन हैं तो क्या हुआ, एडल्ट तो हैं, 18 अबव तो हैं, तू 18 अबव नहीं है लेकिन ठीक है। तो वही है कि डिसीजन मेकिंग है, लेकिन अभी भी अपन ने राइट आंसर नहीं देखा है। सबके लिए अपना अपना ये प्रोसेस अलग होगा। अब तेरे लिए क्या होगा मेरे को नहीं पता, वो तेरे को ही पता है। तू ऐसी चीज़ करने से पहले क्या क्या सोचता है। जैसे सूरज है, सूरज थोड़ी चीज़ें सोच लेगा, लेकिन वो ठीक से मतलब उस लेवल पे नहीं सोचेगा, बोल देगा हाँ ठीक है चलो करते हैं, and he'll proceed to do that without thinking about the other options, which is basically the difference between a teen and a child. रहता है। तो जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मैं थ्रिल वाला ऑप्शन तभी चूज़ करता हूँ इफ़ आई एम कम्प्लीटली श्योर that if I use the right technique and the right
if I have the right mindset and I know the reason behind it all, फिर मैं वो चीज़ प्रोसीड करता हूँ करने को. जैसे पेड़ क्लाइंब कर रहा था, तो मैं धीरे धीरे मैंने माउंटेन क्लाइंबिंग देख के सीखा कि कैसे एंकल पे फुट रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए. तो मेरे को अपने बारे में पता है, तो मैंने प्रोसीड करा कि हाँ यही है, सोच के कि अगर ऐसे करके मैं अपने आप को पुल करूँगा तो मैं चढ़ सकता हूँ. ये सोचने के बाद मैंने अटेम्प्ट करा. अगर मैं बिना सोचे समझे कहीं पे भी ऐसे रख के हाथ रख के ऐसे चढ़ जाता तो मेरे को ना एड्रेनलिन रश मिलता और मेरे को चोट भी लग जाती. ऐसा. हाँ, तू बता क्या होता है? तुझे क्या लगता है जब वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस चेंज हो जाता है, व्हाट डू यू गेन फ्रॉम दैट, व्हाट डू यू लूज फ्रॉम दैट? मैं पर्सनली सोचता हूँ कि अपन वो क्रिएटिव एबिलिटी लूज़ कर देते हैं. तो फॉलो इम्पल्सेस. क्रिएटिव एबिलिटी टू फॉलो इम्पल्सिवनेस जल्दी चले जाती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अपन जितने पहले इमेजिनेटिव थे, आउट ऑफ द बॉक्स जो सोचते थे, वो अपन ने इतने फ़िल्टर लगा दिए कि अपने बॉक्स के बाहर भी एक बॉक्स है, उसके बाहर भी एक बॉक्स है. बच्चे की तरह नहीं है जो कुछ सोचता ही नहीं. तो जब तक आप उस एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर लो, सोचने की एबिलिटी को, तब तक आप क्रिएटिव नहीं हो सकते. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, मैं बोलते हैं ना, अगर बच्चे हो तुम तो बच्चे हो तो मतलब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. और अगर एडल्ट हो, आई लॉस्ट माय ट्रैक ऑफ थॉट्स. तो क्या बोल रहा था. हाँ, जैसे बच्चा है तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है. हाँ, हैबिट फॉर्मेशन बोल रहा था मैं एक्चुअली, कि जैसे हैबिट फॉर्मेशन अगर देखें अपन, तो बच्चों की हैबिट फॉर्मेशन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, एवरेज टाइम टेकन बाय चाइल्ड टू फॉर्म अ हैबिट इज़ एक्चुअली लेस इफ़ यू कंपेयर इट टू एडल्ट्स एवरेज टाइम. क्यों? क्योंकि न्यूरल पाथवेज एडल्ट के ब्रेन में पहले से ही बने होते हैं. उससे एडल्ट को एक्चुअली वो न्यूरल पाथवेज को पहले क्लियर करना पड़ता है और उन्हें रीबिल्ड करना पड़ता है. ब्रेक डाउन एंड देन रीबिल्ड, ब्रिक बाय ब्रिक. Whereas चाइल्ड को बस एक न्यू क्रिएट करना है. वही होता है. तो वो इसलिए अपन कभी भी बोलते हैं ना, उसके माँ बाप ने इसे क्या सिखाया, अपन सोच के नहीं बोलते, लेकिन उसका एक रीज़न है कि जो बच्चा है उसकी आधी हैबिट फॉर्मेशन जो होता है उसके मम्मी माँ बाप करते हैं. और अगर माँ बाप हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे तो उसका एक बेस पहले ही बिल्डअप हो जाएगा. तो न्यूरल पाथवेज एक तरीके से पेरेंट्स बिल्ड करके देते हैं आपको. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब रियलाइज़ करते हो कि यू आर एक्चुअली कॉन्शियसली मेकिंग दोज पाथवेज एंड यू हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय देम एंड देन क्रिएट न्यू वंस. तू बता इस बारे में तेरा व्यू. I think there's ways to gain that creative impulse back, and I think it comes from being less pragmatic and following your instincts over time. Even that on its own is a habit, right? Being able to follow your creative instincts, and just like every other habit, it comes from repetition and practice. तो अगर क्रिएटिव एबिलिटी एक इंस्टिंक्ट हुई, इंस्टिंक्ट आई डोंट थिंक इंस्टिंक्ट हैबिट और रिपीटिशन में आता है, उसके अंडर में आता है. अगर क्रिएटिविटी एक टाइप का इंस्टिंक्ट है तो क्या हमें उसे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है या वो नेचुरल होना चाहिए जैसे कि ह्यूमंस में इंस्टिंक्ट होती है.
मैं प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट का हाँ। एग्जांपल लेकर बोल रहा हूँ. So, it's more about following that instinct as opposed to having that instinct. You have to consciously realize where those instincts are. और अगर वो नहीं होते हैं, then I know for a fact that I've boosted my own creativity just by doing certain forms of meditation. There's one where I do it every night. It helps. It's very good for sleeping, and it just makes me more creative. And it's the ability to, when you close your eyes, you start seeing lines, you start seeing shapes. तो अगर एक shape को follow करेगा ना, it's like you start creating your own animation in your head. You start visualizing things. लेकिन देख जब भी अपन इमेजिन करते हैं तो इमेजिन हर चीज़ जो होती है वो विजुअल तरीके से होती है. हाँ. अपने दिमाग में अपन इम्पेयर्ड की बात नहीं करें अभी तो ज़्यादा अच्छा है. विजुअल रहती है कि जो अपन ने पहले से ही देखा हुआ है. जैसे सी, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, आई हैवंट फाउंड द आंसर येट, कि सी जैसे दिमाग में सोचता हूँ तो एक ऐसा एक शेप आता है. वो मेरे को कैसे पता कि सी है? हम सी उसे क्यों बोलते हैं? इज़ देयर ए रीजन बिहाइंड इट ऑल? क्यों? क्योंकि एक इंसान ने उसे नेम कर दिया, ही डिफाइंड इट, दैट्स द लेटर सी. डज इट हैव अ पर्पस? नो, इट डजंट. ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ के लिए है. यू जस्ट डिफाइन इट एंड आई थिंक इट loses something in that person. मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिव एबिलिटी ऐसे आ सकती है if we lose something's purpose, if we forget to define it, if we clear every pathway, if we clear our mind and forget what that thing visually is, or from audio. If I say a shriek or a moan or a growl, you can actually audio na, you can actually imagine the audio. Why? Because you have heard it, your brain has actually made copies of that, and every time I say that word, growl, shriek, moan, it replays that tape over and over again, so that you get a rough idea of what I'm talking about. So then if everything is like that, then creativity isn't actually creativity. It's just copying and changing small bits of work of others who actually named that thing, and then presenting it onto people who can't see it from your perspective. अब बता. So it's like if you have a shriek and a growl, creativity would be finding something between a shriek and a growl. Creativity would be not knowing what a shriek and growl is. And when I say shriek, you actually can't imagine what shriek is. If the slate is completely blank, and then your brain, without knowing, actually imagines, like a child. When if a child does not know a word and you ask him what that word means, he will just he will make something up and then say it. That's creativity. What do you think a Garfunkel sounds like? What? A Garfunkel. See, because I don't know what it is, a gar means I can imagine like gargle or a funkle. What the hell is that? Gargle. Oh, funky, something funky. So I'm actually imagining it by adding certain type of words. But then also, it is a mixture of those words that I'm imagining. What if I forget what those words are? Garfunkel. Actually over enunciate it and then say it in different type of senses.
That's what being a child is all about. That's why I love children. I'm not a pedophile, but a child. तू बता कैसा आइडिया? I think it's there's the way I see creativity. It's like a circle, right? It's a circle of everything that has been created, right? And Already been created. yeah, everything that's already been created, and your job Is to derive out different sizes of that circle, same circle, different ellipses. it's Deform it. it's to exactly, it's to deform it, it's to push the boundaries in certain areas, So that it feels unique, but it isn't actually as unique. because you're still technically inside the circle, you just Yeah. change the boundary, right? So when we talk about things like AI and stuff, I don't think AI is getting rid of creativity at all, because it's not pushing the boundaries, it's just making more dots inside that circle. Actually, AI is like an adult. It already has some information fed to it, which it deforms to a certain level that human beings can't recognize it fully, and then proceeds to give it back to us. What do you mean by that? Output, and then we think that AI is very creative, but it actually isn't. So like I said, the shriek and the growl thing, no? Yeah. What AI will do, it will find something in between that. Between that, it will totally deform it. You don't know what its roots are, and then it will present that thing to you, and you will find it completely mesmerizing, or I think AI is great. I think it's great for it's gonna be great for humanity in the long term. Right it now, will be, but if people start relying on AI too much now, then they will lose what little bit of creativity that they have left. See, when I talk about creativity, at the same time I am actually giving you an argument against knowledge, being knowledgeable. If you gain a certain amount of knowledge, then according to the thing that I just said about creativity, you actually start losing. See, it's like a two-way gate. You getting more knowledge, and you start to define all your bases and your scientific reasons, and you start to give reasons. At the same time, the creativity is going out of the window. definition is the antithesis to creativity. Yeah. Can you gain knowledge and close both doors and selectively push out the other when one part of it is needed? That's an interesting outlook. I don't know if I agree with it though. I don't know if I disagree with it either. I myself, maybe if you talk to me after a few weeks, maybe I would have different views about it. Maybe I would have gone through what I just said and then proceed to change my views about it. Think about that problem in depth. I think the constant desire to seek out knowledge, to seek out Wikipedia articles,
It's like it's filling the gaps in the circle. And then the job of the creative But is to you have actually made a circle now. If you don't have a circle, you won't have to fill one. But as human beings, we can't realize that our parents and everyone around us is helping us make that circle. And when we realize that, the circle has already been drawn. So, in that sense, are we really losing our creative ability, or can we erase that line or boundary that stops us from being fully creative? is it stopping us? It is stopping us to a certain extent if you think about it. But then there are people which we are told are naturally creative. Designers, for example, the big designers in that documentary Abstract, Netflix. They also have their circles drawn, but I think they know when to move out of that circle and think for themselves and give the people an idea as to what not thinking actually feels like. It's like doodling. You forget what shapes are, you forget what things are, you forget what you have made, and when somebody tries to tell you to explain that, I always get irritated. Like, why do you want me to explain that? For you, it can be another thing. For me, it can be another thing. The point of doodling and art is not to explain it, but to, feel it. Because the moment you explain it, it devalues It what you devalues, made. yeah, it devalues. And people start to explain, people tell me to give a meaning to my work, that why have you actually made it, what feelings do you feel. So I actually found out a way to give meaning to it. I'm not actually giving meaning to it, but I'm actually showing the third person that it has a meaning. Every time somebody asks me that what does it mean, I gave them a different answer. Every time, different answer. I am just being creative with the meaning. I'm just talking about different things I feel at that moment, and then proceed to intertwine that with my work. On the other hand, if I really tell them the meaning, it actually has no meaning. The moment I start drawing, my mind goes completely blank. Until I've completed my work, it is blank. What about you? For me, whenever I've made art of any kind, it's always been about, it's been a two-step process that turns into a loop. First step is to make a line or a shape or copy and paste an image. And then the second one has been to follow through with it. Distort it. Yeah, so say for example, I'll make an ellipse over here and then I'll consider it. And I'm like, how do I want this to move forward? What direction do I want to take this? And I'll follow that impulse. And then, like you said, I'll either distort the ellipse itself, or I'll put something else in place and make that the direction for it to go in. Combine certain thought processes and give it a whole new outlook or image. I think it's impulse and connection. You follow an impulse, then you make a connection. Follow an impulse, make a connection. And I think now that I'm able to articulate this, I think that's largely how my thinking process also goes, in terms of just
the way my philosophy works. This is the way that I think about the world. It's like a spider web basically. You keep on going and making connections, but at the end it's still comprehensible. I think creativity should be incomprehensible. You can't make out sense of it. You can't actually understand it. The person that has made it, he himself or herself actually can't. I think of it like that, but when it comes to physical or actual application, I lack. I think that would be a divine form of creativity, because creativity is inherently divine, no? Because everything, I've said this so many times now, but everything that is around us, every form of creation, it is in some sense a form of God, because God is creation, God is the creator. God is the fire that Prometheus gave to humans, right? And so having something that is as pure as being completely ununderstandable, incomprehensible, I think that would be the purest form of God that we've ever seen. It would be, but there are certain people who require. I'm talking about all the religious people and stuff. They require faith. Faith is actually, it actually gives you a sense of belief to things that are incomprehensible. And don't you think that when we define these incomprehensible divine entities or objects, we make them impure? You don't actually make them impure. You actually restrict yourself from thinking about it and putting a stop to your thought process. And But I think that's the byproduct, no? that's the byproduct of faith. Yeah, and having faith in just having faith in not necessarily just a religion, but anything that you give a definition to. Like, this is what I believe in. Saying this is what I believe in. That brings it back down to earth. It brings it back down to the ground. And the benefits of that is that you get something tangible, something that you can work with. But the problem with that is that it's not pure divine creation, like you said, something that cannot be understood. Yeah. And the closed off mindsets, all the limited thinking, the restricted ways of belief that come from it. Now I'm thinking being tangible closely relates to being human. If we don't believe in something tangible, then we are not human. Exactly. That's why we can't live in the fourth dimension. That's why we can't understand things that go past our metaphysical. Then Things that are divine. the people who claim to be in the fourth dimension, who claim to be divine, they actually aren't, because they still have that hold or grip onto faith. On faith. Human beings can come close to being intangible, but not fully. Then they will lose their actual meaning, their actual sense of self. I think that's the meaning that we have left the human body
we are completely living on the soul. I think that's what soul is. I think, look, when I think of that now, I closely relate it to death. When we are on our dying bed now, in those last moments, I personally think that we are in the process of being intangible with everything, not being human, and during that we feel a sense of peace. But can you consciously do it? Do what? Not be human. At the end of the day, your soul, as high as it wants to fly, as close to the heavens as it wants to reach, But it there will is always be still a limited. thread. But there is still a thread. It actually isn't infinite. It's finite. Do you think it's the human body that makes it finite? I don't, because when you go into that sleep process, huh? When you're between the land of dreams and the land of living, you actually become intangible for a second. You lose the connection to your body and then regain it. Between that point of time, you feel completely blank. Obviously, everyone has felt that. Completely dark. You absolutely feel nothing. I think that's what being intangible is all about. You're still conscious, but you aren't. We done? High tea miss कर लिया. Any final words? कुछ नहीं, बस अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सोच ही सकते हैं इसके बारे में.